Assalamu alaikum students. Now we start unit number 4, reproduction in plants. First one, introduction of the reproduction. Reproduction is the process by which organisms produce moves same organisms like themselves. Reproduction is the basic characteristics of the living things. Flowering plants mostly reproduce their flowers through pollination is the process new seeds are new grow the new plants. First one we explain the parts of the flowers. Most flowers have 4 main parts: sepal, petals, stamens and carpels. First one, the sepal is the green part of the flower. From the green parts protect the flower from the sun and the rain in the bud form. Next one is the petals. Petal is the colored portion of the flowers which attracts the animals and insects from the pollinations of the flowers. Third part is the stamen. Stamen is the male part of the flower. Each stamen has a filament and anther. Pollen grains are produced in the anther. Carpels are the fourth one part of the flowers, are the female parts of the flower. Each carpel has the sticky stigma, style, ovary and ovules. Ovules are present in the ovary. A flower's colorful petals attract the insects that pollinate the pollen grains from the flowers. Pollen grains stick to their bodies and carry them pollen grains from one flowers of the other parts of the flower. This process is called the pollinations. The help of this process, the male sex cells sperm and the female sex cells is the egg. Both are the sex cells called the gametes. In the pollinators, first one we define the pollination. The transfer of pollen grains from the anther of the flower to the stigma of the carpel is called the pollination. Next one, kinds of pollination. There are 2 kinds of pollinations. First one, self-pollination. Second one, cross-pollination. Self-pollination, the transfer of pollen grains from the anther of the flower to the stigma of the carpel on the same plant is called the self-pollination. यानी इसका मतलब ये कि आपका प्लांट जो है वो एक होना चाहिए, उसका एक फ्लावर हो या उसमें दूसरा फ्लावर हो, लेकिन दोनों में एंथर और कार्पल जो है वो आपके एक ही फ्लावर के या दोनों फ्लावर में से ट्रांसफर होने चाहिए. इस कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन. पी, टोमेटो, राइस प्लांट्स आर द सेल्फ पॉलिनेटेड. नेक्स्ट वन, द क्रॉस पॉलिनेशन. The transfer of pollen grains from the anther of the flower to the stigma of the carpel on the same flower and another flower, but the plants of the on the same kind. यानी इसमें आपकी जो काइंड है वो आपकी सेम होनी चाहिए, लेकिन आपका प्लांट जो है वो दूसरा होना चाहिए. अगर आपके एक गार्डन में आपके 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, यानी 2 तरह से फल लगे हुए हैं, लेकिन उनकी काइंड जो है वो सेम होनी चाहिए. is called the cross pollination. Poplar, willow, apples and kinds is called the cross pollinations. Agents of the pollinations is the carry the pollen grains from the anther of the flower to the stigma of the carpel is called the pollinators. Examples: pollinated by wind, pollinated by animals and pollinated by water. Understand, students? Next one, draw the diagrams of the flowers and same जैसे आपकी ये सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेम सेल्फ पॉलिनेशन में आपका एक ही प्लांट था, एक ही प्लांट में उसका स्टिग्मा एंड फ्लावर एंथर, स्टेमन एंड जो कार्पल थे वो आपके सेम ही फ्लावर्स के लिए गए थे. इसमें आपके डिफरेंट नहीं होना चाहिए. आपका फ्लावर डिफरेंट हो सकता है, बट जो आपके कार्पल्स और वो हैं वो आपके सेम होने चाहिए, सेम फ्लावर में या डिफरेंट फ्लावर्स. बट इन द क्रॉस पॉलिनेशन में आपका जो प्लांट्स है वो आपका डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन उसमें काइंड जो है वो आपकी सेम होनी चाहिए. जैसे अगर आपका रोज़ प्लांट है तो रोज़ प्लांट के दोनों पौधे होने चाहिए,
यानी एक पौधा आपके एक गार्डन के एक कॉर्नर पे है और दूसरा दूसरे कॉर्नर पे है, तो वहाँ से आपके जो इंसेक्ट्स हैं वो आपके पोलन ग्रेन जो है वो आपके दूसरे फ्लावर में या दूसरे पौधे के ऊपर ले जाएंगे, तो उससे आपकी क्रॉस पॉलिनेशन होगी। स्टूडेंट समझ में आ गई अब आपको? ये आपने डायग्राम साथ अपने ड्रॉ भी करनी है और साथ आपने इसको लर्न भी करना है। अंडरस्टैंड? थैंक यू।